everybody, welcome to LBS 19 and we're here right at the start of the summer. छोड़ो यार, ये जो फालसे का जूस है. Falsa, Awab is sampling the falsa season at the start of the summer. अरे ये वैसे बाहर नहीं मिलता, ये यहीं मिलता है. falsa नहीं मिलते बाहर? यार मुझे कोई pomegranate नहीं मिलते हैं. दुबई से चिपका कर false चाहिए. अरे यहाँ falsa नहीं मिलते, pomegranate तो अनार होते हैं ना? अनार होता है. वो भी नहीं मिलते. जो लोग तीनों नहीं मिलते कहीं. तीनों नहीं मिलते. जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको मुबारक है देने के लिए तो जड़ से बाहर में जाओ. अच्छा आजकल यार वो आजकल तो नहीं, अब तो खैर पट गया मामला. यार शोएब मलिक, हाँ तो शानिया एंड शोएब, शोनिया तो उनके पीछे जो सब पागल हो गए थे, उनका बेचारा का क्या बना? मैंने तो सुना था सियालकोट में जो है लोग फेंटी पड़ी है और उनकी सानिया की अम्मा को धक्के दे दिए. Actually, what I think, if you look at both of the couples, the dominant is definitely Sania, and the docile and वो है वो शोएब. Sania wears the pants in this relationship. Absolutely. and एक मैं कुछ जियो पे conversation कर रहा था तो वो सानिया मिर्जा कह रही थी बैठी कि शोएब को कोई मेरे नाम से कोई मतलब नहीं है, मैं चाहे इंडिया से खेलूंगी पाकिस्तान. शोएब को किसी चीज से मतलब नहीं है. I mean, it was actually like shoving words into his mouth. तो वो इससे भी मतलब. मुझे बताओ थोड़ी सी डेढ़ शायर भी आग कर रही है. Once she arrived at Karachi airport, the look that she had on her face was like, मैं कहाँ आ गई हूँ, you know. I mean, is India that far different from the? I think it's more of an arrogance issue. Why is she arrogant? यार मैं बताऊँ और हमेशा आप सोचिए पाकिस्तान, it's always been India has the arrogance. Pakistan has always said कि यार दोस्ती कर लो. हाँ. And that attitude has always stayed up. Pakistanis हमेशा. अच्छा पर वहाँ नहीं था यार. When they were giving press conferences, हाँ वहाँ भी बड़ा मतलब उसका घर-बार भी they showed it pretty extensively. It was quite simple. It wasn't that big of a deal. और यहाँ आके वो एयरपोर्ट पे इस तरह यूँ देख रही है जैसे पता नहीं कोई जानवरों के मुल्क में आ गई है या पता नहीं. I got that bit of that attitude always. We are looking probably a little bit looking up to India. I don't like to say that लोग ऐतराज़ करेंगे, but Indians have that arrogance कि we are just the cool kids in the block. So I think that still plays on. और जो सियालकोट में पकड़े डाले उनकी रेजिडेंस के बाद वो तो सुना रात भर डाले हैं. फिर अगले दिन उसको ना प्रेस में आपकी शादी हुई हो, आपकी वेडिंग नाइट पे बाहर हो जो है भंगड़ा डाल दिल धड़ाता जो आपके घर या देने का मूड हो. And apparently it was so bad that people couldn't get into the wedding and भाई किसी को 20,000 रुपए कार्ड रखे. अच्छा मुझे सारी बातें छोड़ दे, एक बात मुझे बताओ, how the hell does a cricketer who has not played in the IPL, who has not played in the county, afford a wedding like this? मैं हक महर यार. 1.25 करोड़ Indian rupee. That's like what? 1.5 करोड़ पाकिस्तानी or maybe more than that. A little bit. उसको छोड़ो, 5 million का जैसा dinner throw किया है. Which he's claiming he's done it by selling his whatever royalties. Yeah. I don't know. ये Pepsi है. The only thing that supports him is Pepsi. Where does he have all this money from? हमारे income tax royalties. Why don't they find out? हर series में I think they're making about $15,000 to $20,000. ठीक है? That playing match fees and etc. मगर उसमें भी नहीं देख मेजर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 2.5 लाख रुपए महीने. Yeah. मैच अलग है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अलग है. ठीक है. फिर भी you're right. फिर भी कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए कि ये साहब के पास अगर पैसे कहाँ से आए. सर ये इतनी फरागत से उनको खर्च कर रहे हैं. मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि from November last year, Jio and Indian Times have been doing that अमन की आशा वाला ड्रामा. हालांकि कुछ ना कुछ करना है, and I think this is perfectly tuned up to play to that sentiment. You think that this अगर conspiracy नहीं हो, किसी ने उसको push किया हो. I don't think conspiracy है. वहाँ से push किया कि वहाँ दुबई में जाके सामने बोलेगी चल मैं तो यहाँ support किया गया कि तुम करो. अच्छा जरूरी नहीं. I'm sure they love each other, they like each other. है ना, मगर पीछे से किसी ने छिड़ाओ कि यार देखो यार तुम्हारी सानिया मिर्जा को कहा कि तुम्हारी popularity. It has been hyped up quite a bit. And perfect for her also, and perfect for Shoaib Malik also. जैसे शोएब अख्तर बैठे ढोल में जाने बाद भागे. क्या मैं भी बड़ी कोशिश की, मैं तो प्लेबॉय हूँ, मेरा कुछ नहीं हुआ. मैं कह रहा हूँ मैं इतनी स्पीड में आता हूँ कि वो शादी अटेंड करके वापस आ गया, किसी को पता ही नहीं चला. ये लतीफ़ा आपने क्या बताया? I wrote this for one of my blogs. अच्छा मुझे ये बताओ कि speaking of your blogs यार, आपने सुना आपका एक आर्टिकल बड़ा न्यूटर करके दादा उन्होंने डॉन वाला. हाँ वो न्यूटर नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि वो the thing is कि obviously they're online newspaper, so they have an editorial board like all newspapers do, and
articles, well, most of my articles, they find have to be toned down. But normally what happens is that they are kind enough to give me a chance to rewrite them instead of chopping and cutting it into pieces. So I do a rewrite at times because वो हमारी जो basically बात क्या है वही जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे बैठ के रात को डिनर पे कि there's a fine line between blogging and writing an article for a newspaper. The language is different, the text, the tense, everything, and the newspaper has to be a little more polished, a little more neutral. और हम लोग तो जो है बिल्कुल ही rant. I mean, the reason I brought that up and हमारे design decision making का मुझे जैसे याद आया, Express Tribune has had a small tussle also, and Wajahat Ali, he wrote an article very slightly attacking article on the media. And he wrote long article, 1-2 paragraph, apparently removed without his permission. And they're kind enough to ask. Yeah, he's ranting on it. He's saying कि मेरा पूरा 1-2 paragraph है, and plus they removed and inserted the name of a media house, which was Dawn. It's written there, which is Dawn. और जो एक उसके initial paragraph was attacking Salil Jung, etc. वो remove मगर I'm not saying कि वो जो उसने जो text लिखा था 2 lines जिसमें Dawn का reference it was complete blatant reference to Dawn but didn't take the name. But the editors expressed, so he was up in fits about that. So I think he should be. And I think suggestion etc. मैं उसको article blog पे लिखने वाला था, but then I actually decided कि why should I get my finger stuck in such an issue जो उसका issue है and he should be able to. You're writing for Express as well. Yeah. Right. Are they editing your stuff? Not now. At least मेरे 2 articles are supposed to do. I mean editing से मेरा मतलब except for language and stuff. Yeah. Are they cutting out parts? No. They asked me to. They asked me to take them and 1100 words लिखा था. They said to me 700. I sent them back 700. But yeah, this is an issue that people face when writing for mainstream media. That there is definitely an editorial board involved, and they have to be involved. वरना अगर हम जैसे लोगों को खुला छोड़ देंगे, तो फिर तो आपको पता है क्या होगा. फिर तो और वो आपने I think you read the unabridged. Yeah. That was fun. That was funny. And then they made it very neutral up. But still, अभी ये cricket जा रही है T20 के लिए क्या करेंगे? यार I think they have a solid chance. आज बांग्लादेश से chance तो है जीतने का, but overall भी मेरे ख्याल से एक बात मैं आपको बताऊं, आपकी टीम में अगर आप देखो तो अब्दुल रज़ाक अच्छा प्लेयर है, अफरीदी भी अगर चल गया तो बहुत अच्छा है, दूसरे भी ऐसे प्लेयर्स हैं आपकी टीम में that they can make a difference. At least semi-finals तक तो पहुंच जाएंगे. But the main problem is we cannot beat India with this team. That's what I think. वो इतने होन हो गए IPL खेल के. Who's your champion? I think India. That's it. That's what. India is definitely on top. England का मैं सोच रहा था, England और श्रीलंका का सोच रहा था. They can. मगर India is. India because of the IPL they have really groomed. Yeah. अच्छा एक बात नोट किया, मेरे कुछ दोस्त हम लोग रात को बैठे हुए थे कार्ड्स खेल रहे थे, तो हमने मैच लगाया थोड़ी देर के, बड़ा डल सा लगा. वो जो IPL के मुकाबले में I mean IPL has made everything such a high standard now that I'm talking aside from the cheerleaders and all that. नहीं मैं कह रहा हूँ ground and all that, वो तो atmosphere जो था, ये तो benches खाली पड़ी थी, खाली किस्म का ground था, and it was like a very dull affair. The hype. I hope it gets hyped up. I hope it gets up. पिछली बार तो ठीक था. Yeah, it was right next to the IPL. तो there was a problem. क्या था? नहीं ऐसा. पिछली बार ये था कि एटमॉस्फेयर थोड़ा अच्छा था, लोग थे, हंगामा था, शोर था. इस बार थोड़ा डर लग रहा है. I hope it gets better. I think जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस होगा तो maybe it will get better. श्रीलंका and New Zealand would watch. अच्छा इस मैच को छोड़ो, ये जो असेंबली में मैच हो रहा है 18th अमेंडमेंट 19th मैच आने वाला है. सब समझ रहे हैं कि जो है वो उन्होंने बहुत ही कोई कमाल तीर मार दिया है और जो है लेगेसी वापस से जिंदा हो गई है पाकिस्तान की. और ये ड्रामा है सर. It's just drama. It's basically एक आपने प्रेसिडेंट से कहा कि प्राइम मिनिस्टर पे इतना प्रेशर डाल दिया कि प्राइम मिनिस्टर रिस्पांस. मुझे एक बात बताओ, I have heard and this is not confirmed, but I've heard कि the PPP co-chairman has the power to dismiss the party PM. Party leader. तो हाँ. तो फिर तो वही आ गई बात वही. The issue here देखो, you have the right point, but also understand कि 18th amendment is actually the sealing of the fate of Zardari's 5 years of tenure पूरे पक्के हो गए. या पर एक बात तो चाहे उसने जोक को जो पीछे किया, एक बात तो क्रेडिट हो कि इसने NFC अवार्ड भी सब कुछ absolutely. I think the amendment भी करवा ली
I hope, or by corruption aside, that's not the issue, but the political decisions he's been able to pull it off. So I think whatever our negativity on that, it still has to show कि भाई इसने बहुत कुछ pull किया है. 18th Amendment बहुत मसले हैं. इससे ये भी तो हुआ. अच्छा एक और पॉइंट मुझे याद आया था कि 18th Amendment से जो सारे जो मार्शल लॉ के डिक्टेटर्स ने जो खुराफात डाली थी कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो रिमूव हो गई, मगर हुदूद ऑर्डिनेंस अभी तक वहाँ उसको क्यों नहीं रिमूव किया जाता? मतलब बेनजीर was the champion of women's rights. So I think maybe let's hope that's the next step that this government can. Maybe, but it's too late now. But no, I think you too late. Yeah, it's you know they are already talking about the 19th. They needed to come through an understanding with the mullahs also. There's no need to be. I think to be able to मुल्लास के साथ understanding का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. हमारी गली में हर नमाज पे प्रॉब्लम हो रहा था because since this masjid of ours has become a sort of a center of and there's a madrasa also, so parking का बहुत इशू हो रहा था. तो हमारी मोहल्ला कमेटी ने क्या डिसाइड किया कि हमने पूरी गली सील ऑफ कर दी, बैरिकेड्स लगा दी. ठीक है, वो लास्ट गली खुली है and this whole area is sealed off. अब जुम्मे के दिन क्या होता है कि मस्जिद के आगे चौक फुल हो जाती है, पार्किंग जो मर्जी में आया करे वहाँ पे. Our area is safe. तो मुल्लों के साथ नेगोशिएशन करने से बेहतर है कि आप अपना जो वो है हिसार है वो बंद कर ले उनसे और उनको बोले भाई आपको जो मर्जी में आया करें, बिकॉज वो आपकी मानने वाले वैसे नहीं. आज तक माने हुदूद ऑर्डिनेंस पढ़ा है, ऐसा पागलों वाला पीस ऑफ लिटरेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन वो है लीगल लॉ, समझ ही नहीं आया आज तक. वो मैं हैदर वही क्लाम से उस दिन बहस कर रहा था इसमें कि मुझे इसकी लीगैलिटी को समझाओ यार कि ये किस तरह इनैक्ट होता है कि मतलब इफ अ वुमन इज रेप्ड शी हैज टू हैव 3 विटनेसेस. तो वो क्या मतलब वो जो है वो सेक्स टेप बना दिए कि वो सारे खड़े होकर देखेंगे. I think 18 to be able to pull this off, they needed a majority, they needed people on their side. Hudud ordinance was too touchy of a topic for them. वो political देखो मेरे ख्याल से ये पार्टी has the power right now to do a lot, and I hope that somebody among them picks up the Hudud ordinance and gets rid of it, because that will be a killer of an last topic. Ted Karachi. Yes. Tell us about that. Ted Karachi is hopefully due to come on the 4th of June. I think we've got a few. And everybody has to write essays to me. They have to. I think we have got such a limited seating of 400 people की ज़्यादा जगह नहीं है. 350 seats हैं और हम extra seats लगा के 400 seats लगाएंगे. So it's on the 4th of June. We have Chris Anderson, the curator of TED. What is TED? People need to know that as well. TED Technology, Entertainment and Design is an international initiative from 1985-86. It's a very elitist type of club where innovators, designers come in like Bill Gates, Steve Jobs, and सारे क्या नाम उसका president, vice president, Al Gore. They've all come spoken about their ideas, innovations, and how they can change the world. Basically, it's an ideas conference. It's an ideas conference. अच्छा पाकिस्तान में भी I think TED initially has 3 conferences: TED Global, TED India, and TED itself. And उसके अलावा हर शहर में हर मुल्क में हो सकता है. तो हमारा TEDx का लाइसेंस मिला है हमें, a one-time license. We have to host an event and raise funds, raise money for that event. We can. Are you planning to do this? On the 4th of June. Okay. Inshallah, we have a list of about 6-7 speakers. 18 में से ज़्यादा speeches नहीं हो सकती. Is there other people coming in from India as well? Not in India. We got 2 people from the US. Jacqueline Novratz, who is Acumen की head है, and Acumen Foundation की head है, and the other is Chris Anderson from TED, the initiator. And we got about 5 more speakers from locally. We will have short films between that. It's going to be a big thing. It's never happened before. It will definitely be a big thing, and I think we are working. Put us on our map as well, I think, right? Well, yeah, definitely. We actually, Marshall say, जो planning है, the ideas that we are floating on that. I agree. We got such a limited number of speakers. We're picking and choosing a lot of people, but inshallah, in about a few months, we'll have Karachi, Lahore, Islamabad. So what's the message we want to send out for TED? TED, I think basically if you want to attend, you should write an essay. We need to differentiate people from freeloaders and people who actually wanted to come in, because you need to write an essay of how many words? Well, half a page. Half a page why you want to be there. Why you want to be there. Or एक और alternative हमने ये भी दिया है कि अगर short film select, we're probably going to select about 4 or 5 short films
उसमें if your short film is being featured, you will be invited to TED also. TEDx. So हमें क्या अशर ड्रिंक्स ट्रॉली वो फैसल पार्टी में ड्रिंक्स ट्रॉली. This is the 19th episode of Late Back Show, and this is Faisal Kapadi and Nawab will be signing off. See you next time. See you guys.